Am I audible? Hi guys, am I audible to you? Can you guys hear me? So are you guys ready to do the PYQs today? And do you guys have any preference for which chapter should we discuss today? Or I'll just go with ecology, like I'll start with ecology then. हमने 2 यूनिट्स तो पूरी कर ली, बायोटेक की एंड माइक्रोब्स की. अब आई वाज थिंकिंग कि पहले इकोलॉजी कर देते हैं, देन इकोलॉजी कर लेते हैं, देन जेनेटिक्स कर लेंगे, देन उसके बाद रिप्रोडक्शन कर लेंगे. सिंस रिप्रोडक्शन सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी. तो आई मुझे ऐसा लगता है, मेरे मेरे साथ ये सीन था पिछले साल. सो आई थिंक दिस कैन हैपन. बाकी यू गाइस टेल.
यस सो बता दो if you have any preference to study. चलो 8-9 हो रहे हैं अभी 8-10 तक वेट करते हैं ओनली 1 मिनट देन विल स्टार्ट क्योंकि ये वेट करने में बहुत टाइम जाता है तो बस 1 मिनट विल वेट एंड क्वेश्चंस मैंने लगा दिए ऑलरेडी उसके बाद विल स्टार्ट ठीक है and the people who are joining in right now I was asking a question that should we start with ecology unit today because I feel कि वो वाला यूनिट बहुत कम हुआ होगा राइट एंड फिर उसके बाद हम जेनेटिक्स करेंगे जेनेटिक्स के बाद हम रिप्रोडक्शन करेंगे रिप्रोडक्शन बिकॉज वो सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा आप लोगों ने फर्स्ट 3 चैप्टर सॉरी हाँ फर्स्ट 3 चैप्टर्स बट पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट 4 चैप्टर्स हाँ लाइक राइट लेट्स स्टार्ट देन ठीक है So, before moving on with the questions, I would just like to introduce myself, give my quick introduction. My name is Aarushi Anand, and I'm from Hindu College. I take 8 to 9 PYQ sessions on ExamFactor, and I am currently doing BSc Zoology Honours. And I gave my CUET exam in 2023, and I got 100 percentile in biology, psychology, English, and I got 99.8 in chemistry and around 99.8 in physics as well. Right, so exam factors offering you mock test series in which you can avail the mock tests for all the subjects that are there on your screens and I've told you multiple times why mock tests are important because um, you need a lot of practice and you need to strategize your game and you need practice of CBT as well like not just questions but the pattern also now, the crash course. So, Exam Factors offers you crash course in the subjects on your screens, and आपकी ये one shot video series होती है basically for one chapter. ठीक है, so you can cover all the chapters in this crash course. And general test के लिए लेना ये crash course if you are planning to give general test and I have no idea about it because general test में you don't need to spend a lot of time but having a one shot video lectures crash course would be beneficial for you guys ठीक है so now let's start on with the questions I hope कोई problem नहीं है अभी तक yeah so these are the questions जो पहले हमने already discuss किए हुए हैं but we'll start with these today okay so the question is a passage based question and उसमें ना आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं
But the first question that you have is observe the diagram and answer the question given below. ठीक है, now I'm giving you 2 minutes to, I mean ठीक है इतना कुछ खास तो नहीं है, but yeah, 1 minute to observe this diagram. And yes, diagram observe करो and I'll be back in a minute. So have you guys observed this diagram? तो चलो question number 1 से start करते हैं. Which of the following constitutes the first trophic level? Is that even a question? Yeah, I'm so sorry. Yeah, so is that even a question? Obviously इसका आंसर यही है. बट ऐसे तो हम नहीं छोड़ देंगे किसी भी आंसर को खाली आंसर किए करके. तो herbivores के बारे में जरा थोड़ा लिख लेते हैं. They are what? They constitute the second trophic level. Sorry. And they are primary consumers, right? And plants are also known as producers, right? And when we talk about carnivores are they are third या fourth या fifth. ठीक है, ऐसे करते हैं. ट्रॉफिक लेवल मतलब कोई भी हो सकता है ना. प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, इसमें भी तो ये होता है. तो अगर कार्निवोर है तो सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, राइट? सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर अगर हम फोर्थ ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो इट कैन ऑल्सो बी क्वार्टनरी tertiary consumer, right? And then it can be primary or secondary carnivore में भी we have types. ठीक है. अब now when we talk about omnivores, they can either be in the second or the third trophic level. tier लिख रही हूँ. And they can either be primary or secondary
consumers. God, I hope this is clear, isn't it? So yeah, इसका एक बार आंसर भी देख लेते हैं. Option number 1 is the correct answer. I forgot to bold this. Yes. So now this is your second question and it's a very nice question. It's मतलब एक example दिया हुआ है ना, and sparrow का. So what should be the answer? अच्छा, तो देखो वैसे तो ना स्पैरो के साथ सीन क्या होता है, then like sparrow के लिए both of this primary consumer and secondary consumer, both of them are actually the correct options because when sparrow eats seeds, ठीक है, when they eat seeds तो they are primary. मैं 1 degree लिख रही हूँ and I hope you guys will understand 1 degree का मतलब 1 है, ठीक है. And if sparrow, ये एग्जाम्पल बुक में भी दिया हुआ है आपके कि स्पैरो का जो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, जब वो सीड्स फ्रूट्स पीस खाए तो दैट इज फॉर प्राइमरी एंड व्हेन दे ईट worms etc so they are secondary, ठीक है. बट अब हम इसमें क्या करें, which sparrow comes under which of the following categories, क्या करना चाहिए इसका आंसर, प्राइमरी और सेकेंडरी. देखो ऐसे तो ना ये ऑप्शन में दोनों सही होने चाहिए, इसमें कोई एक सही होने का ऑप्शन नहीं है. इतना जरूर कह सकती हूँ कि इसका आंसर टर्शरी नहीं होगा, ठीक है, और ना ही तो इसका आंसर प्रोड्यूसर्स होगा किसी भी हालत में, ठीक है. सो दिस इज फॉर श्योर. बट क्या इसका आंसर 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, व्हाट डू यू गाइस थिंक. वैसे इसका आंसर 3 दिया हुआ है एंड आई लाइक कोई बेसिस नहीं है 3 देने का, तो बट ठीक है हम लोग कंसिडर करते हैं. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आप सेकेंडरी कंज्यूमर डाल देना. Now third question. Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time called as standing crop, living crop, standing life, time crop. What is the answer? हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा सोचने वाली बात भी नहीं है, ना कुछ एलिमिनेशन है ना कुछ एक्सप्लेनेशन है कि बाकी आंसर्स क्यों सही नहीं होंगे. इसका तो एक ही आंसर है एंड एक ही करेक्ट आंसर है, स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है ना. सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. Now question number 4. Which of the following, which among the following is not a primary consumer? Snake, grasshopper, zooplankton and caterpillar. So basically not a primary consumer. That means a herbivore.
ठीक है. So which of the following is not a herbivore? It's as simple as that. So is grasshopper a herbivore? Yes, herbivore है. ठीक है. Same with zooplankton is also an herbivore, and caterpillar is also a herbivore, right? That only leaves us with snake. So snake is the answer. Snake is not a herbivore or a primary consumer. ठीक है ना? Let's see the answer. And option number 1 is correct, which is snake. Question number 5. Which of the following is a part of the detritus food chain? Birds, man, snakes, earthworm. Again, a very easy question. हम लिख सकते हैं इसको not a part of GFC. GFC, grazing food chain. बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए. Yep, so okay. इसका आंसर बर्ड्स तो नहीं होगा, जीएफसी का पार्ट होते हैं. जीएफसी, जीएफसी प्राइमरी या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ठीक है. स्नेक is a secondary consumer, GFC, and a secondary consumer. Birds are either primary or secondary. So earthworm is the correct answer. I don't think so इसमें तो किसी को problem होगी, right? These are very easy peasy questions. ऐसे questions आए तो you will be able to do it, right? Okay, now this question might take some time, so I'm gonna give you 1 minute for this. Solve this.
ओके, सो डिड यू गाइस सॉल्व? चलो एक और बार सॉल्व करते हैं. लिस्ट 1 says ट्यूबेक्टोमी, कॉपर आयन, सर्विकल कैप्स, वैसेक्टोमी. लिस्ट 2 says barrier method, surgical method of sterilization in human males, surgical method of sterilization in human females, and suppressed motility of sperms. तो ये तो लाइक बहुत ईजी है, राइट? सो हम ट्यूबेक्टोमी से स्टार्ट करते हैं. ट्यूबेक्टोमी, अच्छा सा कलर लेंगे. Tubectomy, it's a surgical method of sterilization in human females, right? Now, copper ions suppress the wait. Copper ions suppress the motility of sperms. Cervical caps. Wait. Cervical caps. Option क्या बचा और? What option do we have? It's a barrier method, right? Vasectomy. Again, अब तो कोई option बचा ही नहीं, for real नहीं बचा. So vasectomy is the surgical method of sterilization in human males. अरे यार. Yes, so now the correct option. एक सेकंड नहीं क्या हुआ? So choose the correct option. We have A3 जो हमारे पास 1 और 2 दोनों में है. We have B4 जो हमारे पास सिर्फ 1 में है. We have C1 and we have D2. So this makes it the right option. Now match the list. Okay, wait. इसकी explanation भी है. But I don't think so ज़रूरत होगी because it's a pretty simple question, right? Now this is a question जो कि हमारा drugs वाला part में से. इसका answer again giving you 1 minute to solve this. ये क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है, आपको याद है? चलो पहले मैं तो बहुत सिंपल कैनाबिनॉइड से स्टार्ट करो आप, ठीक है? मतलब इट्स वेरी इजी इफ यू सी, इफ यू कैन फील लाइक कि हाँ यार ये थोड़ा पड़ा हुआ सा नहीं लग रहा, मे बी ये ना हो पाए, बट ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद निकोटीन. ऑल ऑफ अस नोस कि निकोटीन किस में होता है, राइट? किस में होता है निकोटीन? टबैको में होता है. निकोटीन इज इन टबैको, ठीक है? कोकेन, कोकेन, कोकेन you have in this नाम में ही है एरिथ्रोजाइलम कोकेन, कोका. So it has to be this. Cannabinoids, cannabinoids. Again नाम में ही है आपका. Cannabis sativa, cannabis sativa. अरे now heroin,
एक ही बचा, पैपेवर सेमिनिफेरम, जो कि आपको याद होना ही चाहिए। हेरोइन किससे आता है ये याद होना ही चाहिए। चलो अब हम चेक करेंगे। नाउ वी हैव 1 का 4, वी हैव 1 का 4, सो हमारे पास एक फोर्थ ऑप्शन है जिसमें ये है, बी का 3 है, सी का 2 है एंड डी का 1 है। ठीक है, तो दिस इज द श्योर शॉर्ट द राइट आंसर एंड दिस इज हाउ यू कैन डू इट इवन इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर। ठीक है, now question number 8, again 1 minute to do this. This is also very easy, very easy. Yes, so डाउन सिंड्रोम से स्टार्ट करते हैं। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम तो बहुत इजी है राइट। इट्स व्हाट, मतलब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे किसी और तरीके से लिखा हुआ है, बट डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इफ आई मी, अरे लिस्ट खराब हो गई। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ठीक है ना। अब 44 में तो 22 पेयर्स हो गए। ठीक है, नाउ 22 प्लस 1 दैट इज 21 की ट्राइसोमी, सो इसका आंसर इज दिस। सो दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, दिस इज द ट्रिक पार्ट इसमें, राइट। नाउ थैलेसीमिया की बात करते हैं। थैलेसीमिया इज लाइक इन दोनों में से कोई भी नहीं है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई एंड 44 प्लस एक्स ओ। I mean, thalassemia is not a chromosomal disorder, it's a Mendelian disorder. Thalassemia is a Mendelian disorder. So it's this. ठीक है, नाउ क्लाइनफेल्टर्स और टर्नर में देखो, अगर कंफ्यूजन है तो आई कैन गिव यू अ ट्रिक। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो मतलब वैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो एक तो वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, ए का 4 बी का 2 देखने के बाद। अच्छा, नाउ यू हैव 1 और 2 में ऑप्शन कि इसका क्या होना चाहिए। ओके, सो मुझे ना हमेशा ऐसे याद रहता था दैट टर्नर, ठीक है, टर्नर इज लाइक एक्स को टर्न कर दो तो वो तब भी क्या रहेगा, एक्स रहेगा, राइट। एंड एक्स को यू कैन राइट इट लाइक, मतलब एक्स इज बेसिकली से क्रॉस और से जीरो, या जीरो काटा खेलते हो तो एक्स और जीरो आता है, राइट। सो एक्स को क्रॉस कर दो, एक्स को टर्न कर दो तो जीरो हो जाएगा, मतलब ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू लर्न दिस, बट मेरे को ऐसा याद रहता था। ठीक है, तो टर्नर्स वाज ऑलवेज लाइक दिस फॉर मी, टर्न कर दो एक्स और ओ को, and then Klinefelter automatically becomes अपना
XX plus y, 44x plus y. ठीक है, so the correct option is A का 4, C का 1 and option number 2. Option number 2 is the correct option. ठीक है. Oops. Okay. So yes, this is a little tricky question again. Save आधे minute, giving you like half a minute is on this, but easy है. Okay, so let's solve. List 1 says, oh wait. List 1 says आपका dominant trait of pod color in garden piece. Pod color की बात हो रही है, seed color की बात नहीं है. So वो क्या होता है? Pod color कौन सा होता है? Pod color मैं बताती हूँ. Yellow होता है. Pod color is yellow. उल्टा होता है pod color और seed color में, ठीक है? तो orange हो गया. उल्टा होता है, ठीक है? Physical association of two genes on a chromosome. Physical association of two genes. Physical की जब like physical word आ जाता है ना, physical association, there has to be one thing. That has to be one thing, which is linkage. Linkage is the physical association. ठीक है? The traits generally controlled by 3 or more genes. अब इसका बताओ, इसका polygenic traits है या pleiotropy है? Polygenic traits है या फिर pleiotropy है? And when a single gene exhibit multiple phenotypic expressions. Single gene exhibit, ये दोनों बताओ मेरे को. इसमें I guess तुम्हें confusion रहती होगी शायद. तो इसका आंसर मेरे को बताओ. I think this is the second last question. जल्दी से बताओ, फिर उसके बाद इकोलॉजी पढ़ेंगे. ठीक है, so I'll tell you only. Traits physically controlled by 3 or more genes. तो जब भी 3 और more की बात हो गई ना, मतलब ये जो दो words आ गए ना, इसका मतलब ही poly होता है. So it has to be poly. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे polygenic. इधर मैंने, ठीक है, मतलब जब 3 और more कह रहे हैं ना, तो मतलब ही poly है, ठीक है. तो D, when a single gene exhibit multiple phenotypic expressions, वो pleiotropy हो गया automatically. It becomes pleiotropy. So your correct option is A3. Dominant trait of pot color in garden piece. इसका आंसर green है.
वेट देखो, D2 सही है, C1 भी सही है, B4 भी सही है, and everything is correct except A5. Okay, sorry, I am wrong here. इसका आंसर येलो नहीं है और मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंस से येलो चुना था ठीक है, आई एम रियली सॉरी. सो बट द करेक्ट ऑप्शन इज 4 ओनली बिकॉज बाकी सारे कैरेक्टर्स इसी के सही हैं. ठीक है, आंसर फॉर दैट इज ऑल्सो 4. इज दिस द लास्ट क्वेश्चन? नहीं, देयर इज वन मोर क्वेश्चन. ठीक है, नाउ मैच लिस्ट 1 with list 2. ठीक है, एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो द प्राइमेट्स विथ ब्रेन कैपेसिटी ऑफ अराउंड, ये जल्दी से करते हैं ताकि हम करें इकोलॉजी. So the primates with brain capacity of around 900 cc. ठीक है. The primates with brain capacity of 1400 cc and lived in East and Central Asia. The primates which arose in Africa and moved across the continents and developed into distinct races. And the primates with the brain capacity between 650 to 800 cc and probably did not eat meat. So you have to tell me, दोनों तुम ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि पहले कौन आया. होमोसेपियंस तो पहले नहीं आया, राइट? होमोसेपियंस तो है ही नहीं पिक्चर में अभी. होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स, होमो हबीलस एंड नियांडरथल मैन में से सबसे पहले हु केम इनटू एग्जिस्टेंस? ठीक है, सो सबसे पहले तो हमारे पास ऑस्ट्रालोपिथिकस आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया हमारे होमो इरेक्टस. ठीक है, सो डी का आंसर शुड बी होमो इरेक्टस. वाई? बिकॉज इन ये दोनों करेक्ट होने चाहिए. दीज बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. वाई? बिकॉज डी क्यों है इसका आंसर? बिकॉज सबसे कम सी बढ़ेगा ना, हमारा ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ेगी, राइट, थ्रू आउट द टाइम. सो जब हम बोलते हैं 650 to 800 cc, दैट वुड बी द most earliest which species came out to be हमारे evolution के मामले में. Then we come to 900 cc. 900 cc then Homo habilis थे. ठीक है, so the answer for A should be 5. A should be 5. I think ये गलत है क्या? नो सॉरी, अगेन मैं गलत हूँ. वाओ, होमो हबीलिस सबसे पहले है. होमो हबीलिस केम फर्स्ट. अरे ठीक है, ऐसे नहीं करते हम, स्टार्टिंग से नहीं करते, एंड से करते हैं. End is the primate which arose in Africa and moved across continents and developed into distinct races. This is our current species. What is that? Homo sapiens. So the answer for C would be D. C would be 3. Sorry. ठीक है, and D automatically becomes 5 then, क्योंकि तो D का आंसर is automatically Homo habilis. Now you have to tell me A का क्या होगा और B का क्या होगा. The primates which with the brain capacity of around 9, देखो 400 वाला तो it's Neanderthal man. A वाला is Homo erectus. So answer number 2 is correct. I was just telling you कि तुम्हें क्या अप्रोच लगानी चाहिए. ठीक है, बट इससे प्रॉब्लम तुम्हें पता चला होगा कि कहीं पर सिंपल अप्रोच लगाने से भी काम हो जाता है, अपने आप को और कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. सो आई गेस टेक दिस एज अ लर्निंग ओनली, है ना. एंड अभी 8:50 हो रहे हैं. Just give me 1 minute to open the PDF, and that's like I'm taking that break.
चलो ओके, लेट्स स्टार्ट. This is the yes. Hmm. So as I told you कि हम ये पढ़ेंगे हमेशा, है ना? So diversity is not only a characteristic of living organism but also content in biology textbook. Biology is presented either as botany, zoology, and microbiology, or as classical and modern. The latter is uh, euphemism for molecular aspects of biology. Luckily, we have many threads which weave the different areas of biological information into a unifying principle. Ecology is one such thread which gives us a holistic perspective of biology. The essence of biological understanding is to know how organisms, while remaining an individual, interact with other organisms and physical habitats. देखो ये important है, ठीक है? मतलब बस आई मीन ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो चिल. बट हाँ, इट्स ऑलवेज बेटर टू रीड एवरीथिंग सो दैट नथिंग इज आई मीन इम्पोर्टेंट यहाँ पे था, हमने पहले पढ़ लिया. अब देख ये पढ़ लेना एक बार बस, और क्या बोलूँ. हाँ, तो ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ये हम एबायोटिक एंड बायोटिक पार्ट होता है, यू ऑलरेडी नो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल्स: organisms, population, community and biomes. तो बहुत सारे organisms sorry, बहुत सारे organisms मिला के of the same species एक population बनती है. Population is a like given area में एक species जो रह रही है, that is population. Communities and biomes, ठीक है. then बहुत सारी populations मिला के communities बनती है, and बहुत सारा community मिला के with the abiotic factors it is the biomes, ठीक है. so ecological at an organismic level is essentially physiological ecology which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction, ठीक है. so now these are some major biomes. Biomes के क्या example हैं बस? desert, rainforest and tundra, ठीक है. हमारे पास है ये desert. ये ना इसका ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन किस में होती है, तो दैट्स गोना बी योर एनुअल ट्रॉपिक फॉरेस्ट, ठीक है. सबसे कम प्रेसिपिटेशन किस में होती है, सो दैट्स गोना बी इधर आर्टिक टुंड्रा और डेजर्ट, बोथ ऑफ देम आर राइट, ठीक है. देन डेजर्ट वुड बी काइंड ऑफ राइटर. नाउ यू से टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो देन अगेन ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिक फॉरेस्ट ऑल्सो. एंड सबसे कम टेम्परेचर किस में होता है, आर्टिक एंड अल्पाइन तुंद्रा, ठीक है. So regional and local variations each biome lead to formation of wide variety of habitats, right? So हमारे पास ये कुछ examples है extreme और harsh habitats की. Scorching Rajasthan desert, perpetually rain-soaked Meghalaya and deep ocean trenches, torrential streams, permafrost polar region, high mountain tops, boiling thermal springs and stinking compost pits to name a few, ठीक है. Now major abiotic factors may we have temperature. तो temperature is the most ecologically relevant factor. पता है ना कि temperature के हिसाब से हमारा वहाँ के species हम वो species पता कर सकते हैं, determine कर सकते हैं कि अगर कोई arctic tundra वाला species है that cannot live in desert area, ठीक है. So this is just examples इसमें लिखे हैं, you can see. And एक बहुत important है that few organisms can tolerate and thrive in wide range of temperatures. They are called eurythermal, but a vast majority of them are restricted to a narrow range of temperatures such as organisms, and these are known as stenothermal. So eury means wide and steno means narrow. Then water may also we have ठीक है, water is also influence करता है ना. And
इसकी अगर हम बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला भी आपका पॉइंट आ जाता है, जो कि एक PYQ भी है, ठीक है। सो फॉर aquatic organisms the quality chemical composition pH of water becomes important, ठीक है। And some organisms tolerate a wide variety of salinities, that is urohaline and salinity का stenohaline, तो haline is for salinity, ठीक है। Then light में also we have photo period होता है आपका, ये आपको पता है ये photo period क्या होता है। And then इसमें भी इसमें this is a very important point that the spectral quality of solar radiation is also important for life. The UV component of the spectrum is harmful to many organisms, while not all the color components of the visible spectrum are available for marine plants living at different depths of the ocean. ठीक है? So yeah. Then we have soil. Soil की composition, grain size, aggregation, this will determine the percolation and water holding capacity of the soils, which will determine the types of organism, ठीक है। Then again composition and topography determine to a large extent the vegetation in any area, ठीक है। Now we have conformers, regulators and partial regulators. तो हमें सबको अपना बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना पड़ता है और उसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज होम्योस्टेसिस, ठीक है। नाउ रेगुलेटर्स। सो regulators are organisms that are able to maintain homeostasis by physiological sometimes behavioral also. इसमें ना कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए that you need to understand, ठीक है। Sorry. Success of mammals is largely due to the ability to maintain a constant body temperature, ठीक है। रेगुलेट करते हैं constant body temperature, जो warm blooded animals होते हैं वो। conformers होते हैं जो cold blooded होते हैं, ठीक है। तो 99% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment and their body temperature changes with the ambient temperature, ठीक है। So ऐसा क्यों होता है? Because thermoregulation is an energetically expensive for many organisms. This is particularly true for small animals like shrews and hummingbirds. Heat loss or heat gain is a function of surface area. Since small animals have a larger surface area relative to their volume, they tend to lose body heat very fast when it is cold outside. Then they have to expend much energy to generate body animals to rarely found in polar regions. Yep, so migration. एंड माइग्रेशन हमें पता है कि क्या होता है, राइट। सस्पेंड, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे ना हाइबरनेशन और डायपॉज के बीच का डिफरेंस है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाइबरनेशन इज ड्यूरिंग विंटर्स, इट्स एन एग्जांपल ऑफ एस्केप इन टाइम. Many snails and fish go into estivation to avoid summer related problems like heat and desiccation. Under unfavorable conditions, many zooplankton species in lakes and ponds are known to enter diapause, which what is that? Diapause is pause. उनकी डेवलपमेंट पॉज हो जाती है, उनका जो ग्रोथ है that is paused, ठीक है। सो नाउ अडाप्टेशन कैन बी मैनी टाइप की, ठीक है। तो आपके एग्जांपल्स है कुछ कुछ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है एलन्स रूल, विच इज हियर mammals from colder climates generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss. This is Allen's rule, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लो, बिकॉज मैं एग्जांपल्स एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती। सो नाउ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन में आ जाते हैं। पॉपुलेशन एज वी नो एक पर्टिकुलर जगह पे रहकर एक
सेम स्पीशीज़ के लोगों को हम पॉपुलेशन कहते हैं। एंड दिस इज़ अ पॉपुलेशन के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं विच इज़ डेथ रेट, बर्थ रेट, जो एक इंडिविजुअल में नहीं होते, सेक्स रेशियो, ठीक है। एंड दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स, एक्सपैंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। स्टेबल की अगर हम बात करें तो इट्स इन stable I forgot किस में होता है, expanding तो is India and China, declining में is we have Japan, and stable I think US would be in stable, ठीक है। population density as you know is population density is number of individuals living upon the area, ठीक है। and there can be relative densities as well, ठीक है। so जैसे अगर जैसे relative बायोमास की वजह से, तो जैसे 200 पार्थेनियम प्लांट्स है बहुत छोटे, बट एक लार्ज बैनियन ट्री है, तो बैनियन ट्री का बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है वो सिंगल, लेकिन बायोमास उसका ज़्यादा है, राइट। सो जगह वो ले रहा है, बायोमास उसका ज़्यादा है, सो इट्स समटाइम्स नॉट अ वेरी अप्रोप्रिएट मेजर टू कैलकुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। सो देन वी हैव रिलेटिव पॉपुलेशन, उसके बाद हम रिलेटिव पॉपुलेशन रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, सॉरी दिस वाज बायोमास वाली पॉपुलेशन। रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमने एक एरिया में पांच, एक एरिया ऑफ सी में वी गॉट 5 फिशेस, देन वी विल गोना एक्सट्रापोलेट दैट वैल्यू टू द थ्रू आउट द सी, so that's going to be that. And we can also estimate tiger population की values by their footprints, ठीक है। so ये example दिए हुए हैं। then we have natality, mortality, immigration and emigration। natality is plus which is birth rate, ठीक है। immigration is also plus the people, the species that come, mortality is minus death rate, and emigration is also minus with the species that leave, the organisms that leave, ठीक है। this is an equation that you should remember, and exponential growth is only possible in laboratory experiments, and like इसका example होगा बैक्टीरिया, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। एंड ये आपकी आर वैल्यू का एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक वो याद करना है, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एंड इसको हम क्या कहते हैं, दिस द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को जे शेप्ड कर्व, ठीक है। then it is obviously not logical to have an exponential growth model, so we have a logistic growth which is sigmoid shaped, ठीक है। only the fittest will survive, and and the other will be eliminated, so this is dn by dt is equal to rn and k minus n upon k, so ये है आपका। then population interaction में we have mutualism, both the species getting benefited, competition, both the species getting like detrimental effects, because कोई एक जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है। predation में एक species दूसरे species को खा रही है, तो one is benefited, one is not। then parasitism is also like the same। commensalism में one is getting benefited and the other is not having any benefit, and amensalism में इट्स एक को डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो रहा है और एक को कुछ भी नहीं हो रहा। इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम इज एन एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को मार देती है, यार ये क्यों ऐसे क्यों लिख रही हूँ, पेनिसिलियम एंटीबैक्टीरिया को मार देती है, पर वो बैक्टीरिया को तो कोई बैड इफेक्ट, मतलब बैक्टीरिया तो मर रहा है, वो तो उसका माइनस हो गया, बट पेनिसिलियम को इससे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, नहीं ना। सो इट्स दैट, ठीक है। नाउ इनके सबके एग्जांपल्स है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। एंड प्रेडेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं कि प्रेडेशन कॉन्डुइट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर है अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। प्रेडेटर्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दे कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ठीक है। एक्सोटिक स्पीशीज जब आ जाती है तो उसी की प्रेडेटर को लाना पड़ता है ना। दिस इज ऑल्सो समथिंग।
देन प्रेडेटर्स आर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, इन सबके एग्जाम्पल है. बायोलॉजिकल कंट्रोल इन एग्रीकल्चर और समथिंग, सो उसमें भी आपका प्रेडेशन काम आती है. सारे एग्जाम्पल्स याद कर लेना. एंड प्रेडेटर्स बहुत ही प्रूडेंट होते हैं, ठीक है, पर हमारे पास भी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं प्रेडेशन के अगेंस्ट, विच इज कैमोफ्लाजिंग एंड मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल होते हैं. तो इसमें देन एग्जांपल है मॉर्फोलॉजिकल में वी हैव थॉर्न्स लाइक अकेशिया एंड कैक्टस में. मॉर्फोलॉजिकल में वी हैव कैलेट्रोपिस एज एन एग्जांपल, ठीक है. एंड कंपटीशन आ गया. कंपटीशन में अगेन वी हैव अ लॉट ऑफ वेराइटीज, तो सॉरी एग्जांपल्स. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी है कि डार्विन ने बोला था कि स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, ठीक है. अब it was generally believed that competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limited, but this is not entirely true. तो इसके ना तीन एस्पेक्ट्स हैं, इसके तीन पार्ट्स हैं. क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, तो पहली बात ये उन स्पीशीज में भी हो सकता है जो क्लोजली रिलेटेड ना हो बट एक सेम एरिया में रहती हो, ठीक है. सेम रिसोर्सेज, ये उनके लिए भी हो सकता है रिसोर्सेज जो सेम से मतलब दिस इज करेक्ट, सेम रिसोर्सेज के लिए. लिमिटिंग नहीं भी होगी तो एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ के वो हो सकता है डेट्रीमेंटल, ठीक है. सो नाउ दिस इज कंपेटिटिव एक्सक्लूजन, बहुत सारी चीजें दी हुई है. एंड इनफैक्ट देयर इज अ गॉस लॉ, बाद में होगा आई गेस. हाँ, Gauss competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and compete, and comparatively inferior one will be eliminated eventually. ये आपका इस एग्जाम्पल में आ गया बैलेंस वाले एग्जाम्पल में, जहाँ पे कैथामलस was um, affected by barnacle balanus, ठीक है. एंड देयर इज वन मोर एग्जांपल रिसोर्स पार्टीशनिंग का, जो दिया था मैकआर्थर ने वॉर्बलर्स पे, 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वॉर्बलर्स. नाउ देयर इज पैरासाइटिज्म. देन अगेन इसके लिए वी हैव बहुत सारे एग्जांपल्स. इसका है एक्टो एंड एंडो पैरासाइट्स, एंड इनफैक्ट ब्रूड पैरासाइटिज्म इज आल्सो देयर, जो ककू और क्रो में होता है, ठीक है. दिस यू कैन स्टडी, मतलब एग्जांपल्स ही हैं, इसमें कुछ है नहीं. Commensalism में there are two three examples, cattle egret and grazing cattle के बीच में, an orchid on as an epiphyte on the mango branch, ठीक है, ठीक है. then mutualism में बहुत ही ये हमने पढ़ा था mycorrhizae, fungi and roots of higher plants, किसके लिए, phosphorus के लिए होता है ये, right. एंड हमारे पास कोएवुलेशन होता है इसमें, एंड this is one of the very important things कि fixed species can be pollinated by its partner vast species and no other species, so it's very intraspecific, ठीक है. now this is the detail of the example, and now this is a sexual deceit of Ophrys. Ophrys is a plant जो it's a type of an orchid, ठीक है. So ये क्या करता है, one petal of its flower bears an uncanny resemblance to the female of the bee in its size, color and markings, and the male bee is attracted to what it's perceived as female. Thus it pseudocopulates and with the flower, so pollination हो जाती है, ठीक है. So that's the thing, and इसमें co-ovulation is very important to maintain the resemblance of the petal to the female bee. Now I know that I've skipped a lot of things which were examples, and I would suggest you guys to by heart learn that examples, and summary भी एक बार पढ़ लेना. इसकी summary looks like it would have something very important, ठीक है. Now I cannot really explain that much in detail due to time constraints, so I am not, अगर but लेकिन if you guys have any problem तो बता दिया करो, then definitely we'll look forward to discuss everything. But if you guys don't tell तो उसके अलावा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं हो सकता. So I hope that PYQs you enjoyed and पढ़ भी लिया होगा ढंग से. So thank you for today. All the best for your CUET exam and for your preparation. I'll meet you tomorrow, and bye bye.